Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are in the first chapter of second canto, the first step in God realization. और यहाँ पे क्या हुआ था, सुखदेव गोस्वामी ने आंसर करना स्टार्ट किया था. तो फर्स्ट लाइन वो सुखदेव गो स्पीक्स स्टार्ट्स फ्रॉम दिस चैप्टर का फर्स्ट वर्स. He praises about the he first starts with praising the question कि क्वेश्चन कि इन्होंने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा करके परीक्षित महाराज में. एंड देन आफ्टर दैट ही टॉक्स अबाउट इट इस बेसिकली स्पीक्स अबाउट भक्ति, लिसनिंग, चैंटिंग और मटेरियलिस्टिक लोग, ग्रहमेदी लोग कैसे रहते हैं और गृहस्थ कैसे रहते हैं. ग्रहमेदियों के पास हम लोग जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे उनका काफी सारे टॉपिक्स है सुनने के लिए. एंड दे वेस्ट देयर डे बाय स्लीपिंग एंड देयर sorry their night by sleeping and day by working hard like donkeys by so they don't do anything for Krishna. तो उन्होंने एक बोला था कि जो अगर ज्ञानी हो या फिर ध्यानी हो या फिर कोई कर्मी हो, ये तीन योगा कर्म योग कोई फॉलो करने वाला व्यक्ति हो, अगर वो कृष्णा से कनेक्ट नहीं करेगा तो उनका लाइफ वो लोग दे विल नॉट अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. So and of that chanting is very important. We should continuously do chanting. So this is what he spoke about. And then Parikshit, there are some other question answer that is asked. तो परीक्षित महाराज उनको पूछते हैं कि कैसे मतलब वो ग्रेजुअली कम्स अपॉन द कॉस्मोस मैनिफेस्टेशन, विश्व रूप के बारे में आ जाता है. एंड देन he says about एक जगह मेडिटेट करके करना है. एंड देन आई थिंक वी वेर वर्स 24 के परपट से कंटिन्यू करना है. लेट मी स्किप टू दैट पेज. वर्स 24 he speaks about ओम as well. ओम मेडिटेट करके रेगुलर बात करके ओम पे बैठना है. एंड देन we then also kind of with the help of Gaurang Prabhu ने जो दिया उनके बुक में भागवतम सुबोधिनी में. So we connected all the अष्ट angas of this Patanjali and how उन्होंने मतलब भागवतम में किस तरह से वो कनेक्ट किया है, because he is more right now speaking about ध्यान yoga and ध्यान on what, the cosmic manifestation. So we came up till we saw the questions and 24. Yes, last verse का I think हम लोग को 24 का वर्स करना था. Okay, so 24th verse is this gigantic manifestation of the phenomenal material world as a whole is the personal body of the absolute truth, wherein the universal resultant past, present and future of the material time is experienced. तो प्रभु द purport में कहते हैं the omnipotent Lord has his transcendental eyes, heads and other bodily parts distributed everywhere. He can see, hear, touch or manifest himself anywhere and everywhere, for he is present everywhere as the super soul of all infinitesimal soul, although he has his particular abode in the absolute world. तो ये बता रहे कि भगवान सब जगह पे है, परमात्मा या फिर एज इन एवरी एटम, सब जगह पे भगवान प्रेजेंट है. द रिलेटिव वर्ल्ड इज आल्सो हिज फिनोमिनल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज इट इज नथिंग बट एन एक्सपांशन ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल एनर्जी. जो कुछ भी है यहाँ पे, मटेरियल वर्ल्ड हो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो या फिर कुछ भी हो, इट इज ऑल फ्रॉम कृष्णा. इट इज ऑल मैनिफेस्टेड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णाज एनर्जीज. Expansion, although he's in abode, his energy is distributed everywhere. In the Vishnu Puran 120 to 52, it is said that as fire expands its rays and heat from one place, similarly the Supreme Spirit, the personality of Godhead, expands himself by his manifold energy everywhere and anywhere. Prabhupada also keeps giving an example of sun. जैसे sun एक जगह पे है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं अरे सूरज आ गया करके, एक्चुअली सूरज आता नहीं, लेकिन सूरज का जो लाइट है, किरण है, हमारे घर पे आ जाता है, राइट. सो वी टेक्निकली मेक नो डिफरेंस बिटवीन द किरण एंड द सन, द लाइट एंड द सन. तो उसी तरह से कृष्णा का जो एनर्जी है एंड कृष्णा, देयर इज नो डिफरेंस, बट एट द सेम टाइम there is difference between, because Krishna is the energetic and the energy is energy. So it is ultimately for the service of Krishna or controlled by Krishna.
The phenomenal manifestation of the gigantic universe is only a part of his Virata Roop, Virata body. The asuras do not accept any evidential proof from the revealed scriptures. जो शास्त्रों को समझते नहीं है, Prabhupada says indirectly that they are all asuras. जो भी शास्त्रों को समझते नहीं और खुद के हिसाब से करते हैं. Nor do they recognize the authority of the great acharyas. They want to see with their own eyes at once. Therefore, they can see the gigantic body of the Lord as Virata, which will answer the challenge. And since they are accustomed to paying homage to the superior material strength like that of the tiger, elephant and lightning, they can offer respect to Virat Rupa. ये असुर बुद्धि जो रहते हैं उनका कैसा रहता है, उनको शास्त्रों और आचार्य का उनका समझ में आता है, because subtle knowledge, as we keep saying that, right? It is easy, we think it is easy because we are practicing it, but it is not easy for everyone. वो accept करना ही उनको, it is a big challenge for them. It is not so easy, very difficult. तो शास्त्रिक एविडेंस एक्सेप्ट करना, आचार्यों को एक्सेप्ट करना, उनके जो नॉलेज को, ऑथोरिटी को, इट इज डिफिकल्ट फॉर देम. तो कर नहीं सकते. तो उनके लिए क्या रहता है, ऑथोरिटी क्या रहता है, जो ज्यादा पावरफुल है, जैसे कोई हाथी, शेर या फिर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग इंसान, स्ट्रॉन्ग बाय बॉडीली फीचर और स्ट्रॉन्ग बाय हाउ मच पावर दे हैव, पॉलिटिकल पावर या जो भी इन्फ्लुएंशियल पावर. तो उनको वो लोग काफी मानते हैं, हाँ ये व्यक्ति जो है वो काफी स्ट्रांग है करके, और उनको वो ऑथोरिटी समझते हैं. वो व्यक्ति जो भी बोलेगा ऑथोरिटी समझते हैं वो लोग. सो फॉर दोज पीपल, असुरिक बुद्धि, उनको भी भगवान तो सबके लिए मर्सीफुल है, उनको भी एक लेवल ऊपर लाना है. भगवान उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, कुछ तो करना है उनके लिए. तो उनके लिए भगवान का विराट रूप है, जहाँ पे, एंड दिस विराट रूप व्हाट यू स्पीकिंग इज जस्ट a small part of the actual Virat Rupa of the Lord, as per Prabhupada. तो ये विराट रूप जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज जस्ट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, मटेरियल मैनिफेस्टेशन. उसके अलावा बहुत कुछ है जो हम लोग ने भगवत गीता में देखा था, राइट, जहाँ पे टाइम आगे पीछे, और इट वाज वेरी फ्राइटफुल. अर्जुन इतना स्ट्रॉन्ग वॉरियर होके इतना राक्षसों को मारता रहता था, वो डर गया वो देख के. सो वी कैन जस्ट इमेजिन हाउ हाउ फ्राइटफुल, आई मीन हमारा क्या सिचुएशन होगा, एंड प्लस हाउ फ्राइटफुल दैट इज. तो that is different virat, that is even bigger manifestation of this is just the cosmic manifestation. मतलब जो मटेरियल हम लोग चीजें देखते हैं, वो भगवान कैसे कैसे वो भगवान के बॉडी में मैनिफेस्टेड है. So for those people, asuric people, to make them connect with Krishna at a lower level but better than what they are now, तो उनके लिए भगवान ये मटेरियल कॉस्मोस मैनिफेस्टेशन में आते हैं. एंड देन व्हेन दे सी दैट इन दैट मैनिफेस्टेशन कृष्णा को, देन दे रियलाइज, अरे हाँ यार, ये भगवान हो सकता है. So this Virat Rupa of the Lord was especially manifested not for the benefit of Arjuna, but for the unintelligent class of men who accept anyone and everywhere as the incarnation of the Lord, and so mislead the general mass of the people. So Prabhupada कहते कि अर्जुन के लिए नहीं था, and that we all agree. अर्जुन तो he was a devotee, he already knew Krishna, the position of Krishna, but still he requested him to show the Virat Rupa because of general mass with आसुरिक बुद्धि, जिनको शास्त्रों में इंटरेस्ट नहीं है. तो जब वो ऐसा विराट रूप देखेंगे, ओ ऐसा रूप किया था कृष्णा ने, then there is a scope that some of them may say, हाँ कृष्ण भगवान है, or he is at least a authority, he is at a very bigger position. People may say it. Some people may just ignore that part. He may say that it is, they will come up with their own उसका speculation लेके आता है, but otherwise a small portion at least they feel हाँ कृष्ण भगवान है करके, after reading of the Virat Rupa, अरे इतना बड़ा रूप. And other point he says is that becomes a standard. तो विराट रूप में अगर अभी इतने सारे लोग हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं, then this is like a benchmark. अगर भगवान हो तो विराट रूप कर सकते हो क्या? That is the question that we have to ask. अगर विराट रूप कर सकते हो, then can you show that? नहीं, then sorry, we cannot trust that you are God. So this is what basically we can, I mean, just a counter argument. We know that Lord जब आते हैं उनका जो है शास्त्रों में लिखा रहता है, and we know Lord पूरा एंटोराज के साथ आता है. Thanks to Srila Prabhupada, we know some
some what you say, some indications that this person is Lord. One is Shastric, one is he comes with the entourage. So उस तरीके से. सो यहाँ पे प्रभुपादा वही कह रहे कि जो लोग हैं जो चीप इनकारनेशन के खुद को एग्जिबिट करते रहते हैं, तो उनके लिए दिस इज लाइक ए बेंचमार्क हम लोग सेट कर सकते हैं. तो विराट रूपा मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड is simultaneously a challenge to the atheist and a favor to the asuras who can think of Lord as Virat and then gradually cleanse the dirty things from their heart in order to become qualified to actually see the transcendental form of the Lord in the near future. So it is a favor that the Lord is doing. This is a favor of all merciful Lord to the atheist and the gross materialistic. Hari Bol. Mamta Mataji, can you take up this slide, please? Are you around, Mamta Mataji? Yeah, Prabhuji. So, as Srimad Bhagavatam 2.1, the gigantic universal form of the personality of Godhead within the body of the universal shell, which is covered by sevenfold material elements, is the subject for the Virat conception. Persons who have uh, realized it have situated that the planets known as Patala constitute the bottoms of the feet of the universal Lord, and the heels and the toes are the Rasatala planets. The anklets are the Mahatala planets, and his shanks constitutes the Talatala planets. The knees of the universal form are the planetary system of the name Sutala, and the two thighs are the Vitala and Atala planetary systems. The hips are uh, Mahitala, and outer space of the depression of his navel, the chest of the original personality of personality of the gigantic form is the luminary planetary system. His neck is the Mahar planets. His mouth is the Janas planets, and his forehead is the uh, Tapas planetary system. The topmost planetary system, known as Satya Loka, is the head of uh, he who has 1,000 heads. His arms are the demigods, headed by Indra. The 10 directional sides are his ears, and physical sound is his sense of hearing. His nostrils are the two Ashwini Kumaras, and material fragrance is his sense of smell. His mouth is the blazing fire. The sphere of outer space constitute his eye pits, eye pits, and the eyeball is the sun as the power of seeing. His eyelids are both the day and night, and in the movement of his eyebrow, Brahma and similar supreme personalities reside. His palate is the director of water, Varuna, and the juice of essence of everything is his tongue. They say that the Vedic hymns are the cerebral passage of the Lord, and his jaws of teeth are Yama, god of death, who punishes the sinners. The art of affection is his set of teeth, and the most alluring illusory material energy is his smile. His this great ocean of material creation is but the chasing of his
glance over us. Very nicely portrayed. Everything has been given uh, and explained very well. And at last, the smile part is wonderful. Thank you, अरे Prabhu. Hare थैंक यू माता जी, Krishna. हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। सो उन्होंने अभी सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? ही स्टार्टेड describing the Virata Rupa, a part of the Virat Rupa, which is in the cosmic manifestation, to Parikshit Maharaj. और किसके लिए था वो? आसुरिक बुद्धि लोगों के लिए था, who do not accept the Shastras and the authority of the Acharyas. So Prabhupada in 25th purport he says, simultaneously the Lord has multifarious other forms and all of them are identical with the original fountainhead form of the Lord, Shri Krishna. In Bhagavad Gita, it has been proven that the original, transcendental, and the eternal form of the Lord is Sri Krishna, the absolute personality of Godhead. But by his inconceivable internal potency, Atma Maya, he can expand himself by multifarious forms and incon- incarnations simultaneously without being diminished in his full potency. It is basically a definition of infinity. Infinity. इन्फिनिटी वो चीज है, अगर उसमें से आप इन्फिनिटी चीज निकालोगे तो भी क्या बचता है? इन्फिनिटी. इट इज इनकंसीवेबल इवन फॉर द साइंटिस्ट. तो इसलिए इन्फिनिटी हैज ऑलवेज बीन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, डिबेट इवन इन द साइंस वर्ल्ड. इन्फिनिटी में से अगर इन्फिनिटी निकालोगे तो बचा जो रिमाइंडर वो भी इन्फिनिटी होना चाहिए, एल्स एल्स द इट वाज नेवर एन इन्फिनिटी. तो उस तरह से यहाँ पे है जो हमारा शास्त्र ऑलरेडी बोलता है. कृष्णा में से कितने भी इनकारनेशन निकले बट कृष्णा इज व्हाट इज, तो उसमें थोड़ा भी ऐसा कम होता नहीं है. ही ऑलवेज रिमेन्स इनफाइनाइट एंड ही डज दिस विद द हेल्प ऑफ हिज इंटरनल एनर्जी, योग माया, ऑल्सो नोन एज द आत्मा माया. ही इज कंप्लीट एंड ऑल्दो innumerable complete forms emanate from him, he is still complete without any loss. उनसे बाहर आने वाले फॉर्म्स भी इन्यूमरेबल एंड दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ. ऐसा नहीं कि भाई एक छोटा सा टुकड़ा निकला एंड दे आर नॉट कंप्लीट बाय देमसेल्फ. नो, दे आर कंप्लीट बाय देमसेल्फ. दे आर दे आर द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. जैसे कृष्ण है वैसे ही वो है. दे आर द पर्सन ऑफ गॉडहेड. दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट कृष्ण इज कैपेबल ऑफ डूइंग. बट स्टिल कृष्णा में कुछ भी लॉस नहीं होता. ऐसा नहीं अरे पूरा एनर्जी उसमें डाल दिया कृष्णा ने, अभी कृष्णा के पास एनर्जी नहीं है. No, that is not the case here with Krishna. So ऐसे innumerable incarnations आते हैं which are complete in themselves. These incarnations may or may not manifest all the qualities of Krishna. Usually they don't manifest all the qualities of Krishna because they come for a specific purpose. तो इसलिए कुछ qualities दिखाते हैं. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कुछ, he did not show any mystic powers and all, तो he had different purpose. दो कुछ केसेस में उन्होंने उनके कॉन्फिडेंशियल डिवोटीज को दिखाया था अपना रूप, बट अदरवाइज ही डिड नॉट परफॉर्म द सो कॉल्ड मटेरियल मिस्टिक पावर. उनके मिस्टिक पावर वे टोटल डिफरेंट. इट वाज वेरेवर ही यूज्ड टू गो, चैतन्य महाप्रभु, ही यूज्ड he was infectious and he used to spread the love of Godhead. तो जिनको टच कर लेते थे, जिनको देखते थे, उनमें भगवान के लिए प्रेम आ जाता. he was distributing the love of Godhead like anything. So that was the highest level of mysticism that we can say. तो उनका ये था. बाकी बाकी जो अलग अलग फॉर्म्स आते हैं भगवान के, they come for a specific purpose. They are all capable of performing what Krishna is capable of performing, but they only perform what is required for that particular, what is the objective or purpose of that particular avatar. So they are all complete. और इतने सारे complete कृष्णा से बाहर आने के बाद भी कृष्णा is still complete and without any loss. मतलब ऐसा चिंटू मिंटू लॉस भी नहीं, कुछ नहीं. सच विरुद्ध. Okay, so कहाँ पे था मैं? Yeah, that is his spiritual and internal potency. In the 11th chapter of Bhagavad Gita, the person of Godhead, Lord Krishna manifested his Virat Rupa just to convince the less intelligent men, class of men who cannot conceive the Lord as appearing just as human being. It is very difficult, and we see even today, right? भगवान ह्यूमन फॉर्म में दिख सकते, ह्यूमन लाइक फॉर्म में दिख सकते हैं, is very difficult
concept for them. They cannot understand because उनका इंटेलिजेंस उस तरह से है, they are because they are not accepted the authority of scriptures and acharyas. they उसकी वजह से उनके लिए वो काफी डिफिकल्ट है वो समझने के लिए कि भगवान ऐसे हो सकते हैं, भगवान. सो फॉर देम लॉर्ड इज ह्यूज, एकदम पावरफुल स्ट्रांग दिखने चाहिए ऐसे, नॉट कि बांसुरी बजा के गोपियों के नाचने वाले. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गॉड. तो उसके लिए विराट रूप यहाँ पे लाता है. एंड दैट इज व्हाई वी सी many many people, it becomes easier for them to accept Lord Shiva as the supreme Lord as compared to Lord Krishna. At the most they वो बोलेंगे कि यार दोनों एक ही लेवल पे है यार, सब एक ही है करके. But Lord Shiva, they see that in that position because Lord Shiva portrays that powerful तांडव, सब डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो ऐसा प्यार वाले रस नहीं रहेंगे, सब एंगर वो सब रहेंगे उसमें. तो इट बिकम्स सो दोस फॉर पीपल, देन दे एक्सेप्ट, हाँ हाँ ये पावरफुल है, ये पर्सनैलिटी जो है वो काफी कुछ कर सकता है, तांडव करके डिस्ट्रक्शन कर सकता है, तो प्रलय ला सकता है, सो ये भगवान हो सकता है. सो दैट इज व्हाट पीपल सी, राइट. पावरफुल इज इक्वल टू गॉड, ऑथोरिटी. तो उस तरीके से देखते हैं. सो सिमिलरली यहाँ पे वो उनमें भाव लाने के लिए कि ठीक है, यू थिंक पावरफुल इज ऑथोरिटी, देन सी माई हाउ पावरफुल आई एम. तो वो पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन विराट रूप ऐसे लोगों के सामने लाते हैं. सो विराट रूप was particularly exhibited by the Lord just to give lessons to such foolish men so that they can accept a person as the incarnation of Godhead only if such a person is capable to exit such Virat Rupa as Krishna did. The materialistic person may concentrate his mind upon the Virat or the gigantic form of the Lord in his own interest and as recommended by Shukdev Goswami, but he must be on his guard not to be misled by the pretenders who claim to be the identical person as Lord Krishna, but are also able to act like him or exhibit the Virat Rupa comprehending the whole of the universe. तो it is like a benchmark जो हमने बोला था. तो we shouldn't be fooled. लोग आज वही करते, राइट. वी स्पोक ऑफ शिवा, ऑट टू स्पीक ऑफ शिवा. यहाँ पे तो हवे में से अगर आप अगरबत्ती का वो विभूति लेके निकालोगे, आपको भगवान मान लेंगे लोग. सो दैट इज अनफॉर्चुनेट. तो थोड़ा पावरफुल ऐसा लगा, ओ मिस्टिक कुछ जादू है, तो मतलब हाँ भगवान हो सकता है. तो जादू चाहिए तो भगवान बोलता है ये देख, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द जादू जो आपको मटेरियली समझ में आएगा, विराट रूप देख लो मेरा करके. सो दिस इज फॉर दोज पीपल एंड टू गार्ड देमसेल्फ कि कोई आगे आके बोलेगा मैं भी भगवान हूँ. भगवान है तो फिर विराट रूप दिखा सकते हो क्या? नहीं तो फिर आप भगवान कैसे हो सकते हो? सो दिस इज मर्सी ऑफ लॉर्ड ऑन दिस असुरा बुद्धिस. So now he then speaks about कौन सा planet क्या है. So we will just see what we'll quickly summarize once again what Shukdev Goswami said. So एक पाताल जो है, that is the bottom of the feet. Rasatal is there are different planets. ये सारे planetary system ही है इधर. So no worries. So Rasatal is the heels and toes. Mahatal is the ankles. Talatal is the shanks. शैंक मतलब जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं उसको, अपने थाइस के नीचे वाला जो पार्ट है, घुटने का नीचे वाला पार्ट लेकिन पीछे का पार्ट, तो उसको शैंक बोलते हैं. देन तलातल शैंक. सुतला इज नीस. वितला इज लोअर पार्ट ऑफ द टू थाइस. अतल इज द अपर पार्ट ऑफ द टू थाइस. महिथला मतलब अर्थ जो है दैट इज द हिप. भूवर नेवल. स्वर्ग जो है चेस्ट. बाद में महरलोक का नेक. जनलोक का फेस माउथ. तपलोक का फोरहेड एंड सत्यलोक का हेड. तो इस तरह से नीचे से ऊपर तक सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं. उसके अलावा क्या बोलते हैं, आम जो है, दिस इज अगेन फ्रॉम भागवतम सुबोधिनी बाय गौरंग प्रभु. सो ऑल क्रेडिट टू हिम. तो बाद में 20 वर्ष से क्या बोलते हैं, आम जो है अभी प्लैनेट हो गया. अभी बॉडी पार्ट्स का कैसे क्या किधर कैसे बाकी पावरफुल बींग्स या चीजें बैठे हुए. आर्म्स में देवता है सारे इंद्र से बैठे हुए. बाद में ईयर्स में दिग देवताज वगैरह है. एंड ऑर्गन ऑफ हियरिंग वगैरह जो है लिविंग इन. तो बेसिकली हमारा जो ऑर्गन वहाँ पे जो हियरिंग सेंस वहाँ पे है. और उनका जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग में क्या है, साउंड बैठा हुआ है.
nostrils, वापस again gross nostril and the organ for smelling, subtle nostril. उसमें gross nostril में क्या है, अश्विनी कुमार है. और हमारा जो जीवों का organ of smelling है, तो उनके organ of smelling में क्या है, fragrance है, जो subtle है basically. Mouth है, fire के इधर blazing fire है उसमें. Eye pits में क्या है, outer space है, मतलब basically form है. बाद में eyeballs में सूर्यदेव है. आईलिड्स में डे एंड नाइट है. और इन आईलिड आईब्रोज के मूवमेंट में जो है वो ब्रह्मदेव का अबोर्ड है, जहाँ पे बाकी देवता भी रहते हैं. पैलेट में जो है वो वरुण देव है. टंग में जो है वो टेस्ट है, जूस ऑफ एवरीथिंग. बाद में सेरिबल पैसेज में जो वैदिक हिम्स है. जॉस, टीथ में यम है. और जो टीथ है, जो जॉस था वो यम है, जो टीथ है उसमें अफेक्शन है, आर्ट ऑफ अफेक्शन. स्माइल में माया है. और ग्लांस में samsara है. So this is how the cosmic material cosmic form of the Lord has been explained. So we'll move on to the next slide. Prabhu, do you want to take up this slide? Yes, Prabhu. SB 2.1. Modesty is the upper portion of his lips, anchoring is his chin. Religion is the breast of the Lord, and religion is his back. Brahmaji, who generated all living beings in his material world, is his genitals, and the Mitra Varunas are his two textiles. So ocean is his waist, and the hills and mountains are the stack of his bones. O king, the rivers are the veins of the gigantic, gigantic or gigantic, Prabhu, how we pronounce? Gigantic body? Gigantic, na? Some people say gigantic, yeah. Gigantic, yeah, gigantic bodies. The trees are the hairs of his body, and the omnipotent air is his breath. The passing age are his movement, and his activities are the reaction of the three modes of material nature. O best among the Kurus, the clouds which carry water are the hair of his head, the termination of the days or night are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. The best, where I was three modes of material nature, O best among the Kurus, the clouds which carry water are the hairs of his head. The termination of the days or night are his dress, and the supreme cause of material creation is his intelligence. His mind is the moon, the reservoir of all changes. The principle of matter, Mahatattva, is the consciousness of the omnipresent Lord, as asserted by the expert, and Rudra Deva is his ego. The horse, mule, camels, and elephant are his nails, and wild animals and all quadrupeds are situated in the belt zone of the Lord. Varieties of birds and indications of his masterful artistic sense. Manu, the father of mankind, in the emblem of his standard intelligence, and humanity is his residence. The celestial species of human being like the Gandharvas, Vidyadharas, Charanas and angels all represent his musical rhythms, and the demonic soldier are representations of his wonderful prowess. The Virat Purusha face is the Brahmanas, his arms are the Kshatriya, his thighs are the Vaishya, and the Shudras are under the protection of his feet. All the worshipable demigods are also overtaken by him, and it is a duty of everyone to perform sacrifices with feasible goods to appease the Lord. Very good. Very good. Thank you, Prabhu. So again, summarizing: upper portion of the lip, modesty; chin, hankering; breast, religion; back, irreligion; genitals, Brahma; testicles, Mitra and Varuna; waist, ocean; stack of bones, hills and mountains. उनके जो veins है, that is like rivers. उनके hair are trees. Breath is the wind with the prowess of Ananta Shesha. His movements is passing ages, मतलब basically time जैसे, and his activities are reaction of three modes of the material nature. उसके बाद hair on the head are like clouds, dress, twilight. Intelligence is the supreme cause of the material creation, and mind is the moon, reservoir of changes. Consciousness, उनका चित्त जो है महातत्व है, महत तत्व है.
जो सारे क्रिएशन का जो ओरिजिनल ये है मटेरियल है. ईगो इज रुद्रदेव. नेल्स आर हॉर्स, मूल, कैमल, एलिफेंट. हिप्स आर वाइल्ड एलिफेंट्स एंड ऑल क्वाड्रुपेड्स, मतलब चार पैर वाले. बाद में मास्टरफुल आर्टिस्टिक सेंस बर्ड्स है, उनका जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस है वो मनु है. बाद में रेसिडेंस इज ह्यूमैनिटी एंड म्यूजिकल राइम आर जो गंधर्वास, विद्याधरस, जो अप्सरास वगैरह है, जो जो काफी स्वर्गलोक में रहते हैं, काफी म्यूजिकल रहते हैं. देन दर prowess is demonic soldiers. Face is the brahmanas, arm kshatriyas, thighs vaishyas, feet shudras, जो फेमस लोग यूजुअली कोट करते रहते हैं. And the prescribed duties are the methods of sacrifice with ingredients along with the devatas. So this is the everything in the cosmology is captured over here by Shukdev Goswami in the Virat Rupa. So 36th वर्ष में प्रभुपादा परपट में कहते हैं कि मोनोथिज्म इज प्रैक्टिकली सजेस्टेड हियर. Offering sacrifice to many demigods under different name is mentioned in the Vedic literature, but the suggestion made in this verse is that all these varieties of demigods are included in the form of supreme personality of Godhead. जहाँ पे सारे देवता कृष्णा में करके बताया, right? ये अलग अलग फॉर्म में. So Prabhupada is mentioning that in the purport. So this verse suggests कि सारे जो है they are all included in the supreme personal Godhead. They are only the part and parcels of the they are only part of the original whole. Similarly, the division of the orders of the human society, namely the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras, are all included in the body of the Supreme. As such, sacrifice by every one of them in terms of pleasing the Lord by feasible good is recommended. Generally, the sacrifice is offered by clarified butter and grains. But with the progress of time, the human society has produced variety of goods by transforming the material supplied by the God's material nature. पहले क्या होता था, ग्रेन्स एंड क्लैरिफाइड बटर से होता था, लेकिन जैसे टाइम हुआ अलग अलग रेसिपीज बनना स्टार्ट हुए, जो भी उनसे हम लोग ने और कुछ डिराइव किया, तो उससे अभी हम लोग ऑफर कर सकते हैं. जनरली ह्यूमन नेचर therefore must learn to offer sacrifices not only with clarified butter but also with other manufactured goods in the propagation of the Lord's glory. मतलब बेसिकली प्रभुपादा ये बोल रहे हैं कि जो भी हो, जो भी है, कृष्णा को ऑफर करना हमें सीखना चाहिए करके. And that will bring about perfection in the human society. The intelligent man, class of men and the brahmanas may give direction for such sacrifices in consultation with the previous acharyas. The administrators may give all the facilities to perform such acharyas. The brahmanas क्या कर सकते हैं वो पता है, आचार्य के जैसे आचार्य में बोले उस तरह से वो डायरेक्ट करने लोगों को, जो एडमिनिस्ट्रेटर उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है ऐसे सेक्रीफाइसेस के लिए. वैश्य जो है उनको बेसिकली सच गुड्स प्रोड्यूस करना, मतलब फार्मिंग वगैरह करना है और उनको ऑफर करना है, सेक्रीफाइस के ऑफर करने के लिए उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करना है. और शूद्र जो है उनका जो लेबर है बेसिकली करने के लिए, सेक्रीफाइस के लिए जो भी लेबर यूज होता है उनको वो लेबर प्रोवाइड करना है. Thus, by the cooperation of all the classes of human beings, the sacrifice recommended in this age, namely the sacrifice of congregational chanting of the holy name of the Lord, may be executed for the common welfare of the पीपल ऑफ द वर्ल्ड. तो हम लोगों ने जब देखा था चार क्लासेस जब करते हैं, एक भी क्लास निकल गया से, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर शूद्र हो, it is incomplete, right? So there is importance of each and every one of them, and they are all equal from that spiritual perspective. I have thus explained to you the gross material gigantic conception of the personality of the Godhead. I who seriously desire liberation, one who seriously desires liberation, concentrates his mind on this form of the Lord, because there is nothing more than this in the material world. One should concentrate his mind upon the Supreme Personality of Godhead, who alone distributes himself in so many manifestations, just as ordinary person creates thousands of manifestations in dreams. One must concentrate the mind on him, the only all blissful absolute truth, otherwise one will be misled and will cause his own degeneration. So Prabhupada क्या कहते हैं परपट में, less intelligent person with a poor fund of knowledge cannot accommodate the thought of the inconceivable potency of the Supreme
Lord Shri Krishna, by which he appears just like human being. His appearance in the material world as one of us is also his causeless mercy upon the fallen soul. He is transcendental to the material conception, but by his unbound mercy upon his pure devotees, he comes down and manifests himself the person of Godhead. ह्यूमन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज के लिए, वो उसका ओरिजिनल फॉर्म ह्यूमन ही है, बट यहाँ पे जब आते हैं वो ह्यूमन फॉर्म हम पे ही, हम जो उनके भक्त है या फिर जो बद्ध जीव हमारे जैसे, तो उन पे वो मर्सी मर्सी के लिए आते हैं, करुणा करने के लिए आते हैं. Materialistic philosophers and scientists are too much engrossed with atomic energy and gigantic situation of the universal form, Big Bang theory या जो भी है, and they offer respect more seriously to the external phenomenal features of the material manifestation than to the nominal principles of the spiritual existence. तो उनका वो मटेरियल एग्जिस्टेंस में सबसे बड़े चीज को वो ये कर, बट स्पिरिचुअल में छोटा चीज को भी वो रेस्पेक्ट नहीं करेंगे. उनके लिए जो बड़ा है साइज, वो साइज को देखते रहे, दे लुक एट द फॉर्म, दे लुक एट द साइज, और उसके बेसिस पे वो दे कंक्लूड हाँ ये पावरफुल बीइंग है कि नहीं है करके. बिकॉज इन मटेरियल वर्ल्ड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट. जो ह्यूज है ही इज ऑलवेज पावरफुल, जिसके एब्स है, मसल्स है, बॉडी स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, ही इज पावरफुल देन पीपल लाइक अस, जो एकदम मतलब जो नॉर्मल बॉडी फीचर या फिर दुबले पतले रहेंगे. तो दैट इज व्हाट वी सी इन मटेरियल वर्ल्ड. तो इसलिए फॉर लेस इंटेलिजेंट पीपल हु कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस मटेरियल कंसेप्शन, तो उनके लिए देन देयर इज दिस विराट रूप जो भगवान उनके लिए मर्सीफुल होकर कर रहे हैं. बिकॉज भगवान का ह्यूमनली फॉर्म वो लोग देख, बिकॉज भगवान का ह्यूमनली फॉर्म इज नॉट एब्स के साथ नहीं है, एकदम सिंपल 16 साल का लड़का जैसे रहता है वैसे उनका फॉर्म रहता है. So the transcendental form is beyond the jurisdiction of such materialist activities, and it's very difficult to conceive that the Lord can be simultaneously localized and all pervasive, because the materialistic philosophers and scientists think of everything in terms of their own experience. जो हमने बोला, because they are, and not only scientists, सब लोग वही करते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भगवान को वो एक फ्रेम में डालते हैं. मैंने जैसे एक्सपीरियंस किया या मेरा जैसा थॉट प्रोसेस है, भगवान उसमें फिट होना चाहिए. अगर वैसा फिट नहीं हो रहा है मतलब वो भगवान नहीं है. दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग. हम लोग भगवान को वो हमारे मेंटल कॉन्कॉक्शन में भगवान को फिट करने का ट्राई करते हैं. भगवान ऐसा क्यों नहीं करे, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान को ऐसा करना चाहिए था, भगवान ऐसे होने चाहिए थे. हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो मेंटल कॉन्कॉक्शन है, जो हम लोग ने ये जन्म में और पिछले जन्म से हम लोग ने इंप्रेशन क्रिएट किया, संस्कार, तो उसके बेसिस पे हम लोग भगवान को वो फ्रेम में डालने का ट्राई करते हैं. एंड दिस वाज व्हाट आई यूज्ड टू डू अर्लियर, बट थैंक्स टू शिला प्रभुपाद एंड अदर वैष्णव्स, बाद में मुझे समझा कि भगवान को हमारे फ्रेमवर्क में डालना नहीं है, बट हमारा फ्रेमवर्क को भगवान के हिसाब से चेंज करते जाना है हमेशा. बिकॉज लॉर्ड इज वी एवरी टाइम वी लिसन समथिंग न्यू अबाउट, हियर समथिंग न्यू अबाउट लॉर्ड. तो हमारा फ्रेमवर्क को उस तरह से ये करना, और ये फ्रेमवर्क कैसे सेट करना है, नॉट बाय मेंटल कॉन्कॉक्शन बट एज पर शास्त्रस एंड वॉट एवर आचार्य से, उस तरह से हमें करना है. अच्छा भगवान ये कर सकते हैं तो हमारे वो फ्रेमवर्क को ऐसे एडजस्ट करते हैं. अच्छा भगवान ये कर रहे हैं, भगवान ओके, वैसे फ्रेमवर्क एडजस्ट कर दिया, रादर देन कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, भगवान को गोपियों के ड्रेस चुराने नहीं चाहिए थे किसी को, तो ये भगवान नहीं हो सकते ऐसे गोपियों. सो वी सेट अवर ओन फ्रेमवर्क. दिस इज एज पर एक्सपीरियंस इन मटेरियल वर्ल्ड. नए नए कपड़े चुराना गलत है, तो उस हिसाब से हम वो भगवान को भी उस फ्रेम में डालने का प्रयास करते हैं. So because they are unable to accept the personal feature of the Supreme Lord, the Lord is kind enough to demonstrate the Virat feature of the transcendental form. And herein, Srila Shukdev Goswami has vividly described this form of the Lord. He concludes that there is nothing beyond this gigantic feature of the Lord. None of the materialistic, thoughtful men can go beyond this conception of the gigantic form. The minds of the materialistic men are flickering and constantly changing from one aspect to another. Therefore, one is advised to think of the Lord by thinking of any part of his gigantic body, and by one's intelligence only one can think of him in any manifestation of the material world, the forest, hill, ocean, man, animal, demigod, the bird, beast, or anything else. तो ग्रेजुअली जब हम लोग देखेंगे तब हम भगवान का मैनिफेस्टेशन करके उसको देख पाएंगे.
So last verse में प्रभुपादा कहते हैं purport में, in this verse the process of devotional service indicated by the great Goswami Srila Shukdev, he tries to impress upon us that instead of delivering our attention to several branches of self-realization, we should concentrate upon the Supreme Personality of Godhead as the supreme object of realization, worship and devotion. 10 जगह पे अलग अलग करने ब्रांचेस है सेल्फ रियलाइजेशन हम लोग अलग. I have a friend, he was into self realization practice. Onion garlic नहीं खाता था. That was the first time मैं तभी practice नहीं करता था, and that was the first time I saw this. ये ऐसा क्यों कर रहा है, आधा अधूरा क्यों कर रहा है, मतलब करना है तो प्रॉपर जैन टाइप फॉलो करो या मत करो, ये क्या बीच में करके मैं सोचता था. नाउ आई रियलाइज कि वो सात्विक फूड का कंसेप्ट एंड ऑल. सो ही यूज्ड टू डू दैट, बट अनफॉर्चुनेटली ही वाज नॉट फोकस्ड ऑन एनी वन ऑफ देम. फॉरगेट अबाउट सुप्रीम लॉर्ड. उसने इस्कॉन भी ट्राई किया, उसने ये ट्राई किया, सदगुरु सब ट्राई किया उसने. And last time when I spoke with him, he was saying that he always feels depression. उसको इस तरह से feel depression feel करता रहता है, ये करता है, वो करता रहता है. And this is what happens actually when we try to play around with these things without focusing on. This is one side effect. You see some unexplainable changes in emotion या फिर आपके mind thought process में, which you may or may not even realize. In his case, you are lucky to realize that, but in other cases people may not even realize क्या हो रहा है करके, because हमारे life में इतना कुछ problems होते रहता है. We may relate that to one of the problems. So this is what happens when we try to go across all the branches, practice करते without any focus और हमारे खुद के हिसाब से without following a guru. So Shukdev Goswami says stop that all foolishness और सिर्फ एक ही चीज करो भगवान पे, कि उन्होंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बोला था, स्टार्टिंग फ्यूचर वर्सेस में, कि चाहे वो कर्म योगा हो, ध्यान योगा हो या फिर ज्ञान योगा हो, जब तक तुम भगवान से कनेक्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ. So this is what Prabhupada is reiterating over here. The Supreme Lord is one and his expansions are various. He is therefore the super soul of everything. When a man sees anything, he must know that his seeing is secondary and the Lord's seeing is primary. One cannot see anything without the Lord first having seen that. कुछ भी यहाँ पे है, भगवान ने ऑलरेडी वो देखा रहता है. Undoubtedly. There is no second obvious. This is very obvious, right? That is the instruction of the Vedas and the Upanishads. So whatever we see or do, the super soul of all the acts of seeing or doing is the Lord. This theory of simultaneous oneness and difference between the individual soul and the super soul is propounded by Lord Shri Krishna, Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu as the philosophy of the Achintya Bhedabhed Tattva. In the Vedic hymns, it is clearly said that first of all, Narayana cast a glance over the matter. नारायण जो है, भगवान नारायण मैटर पे सिर्फ ग्लांस करते हैं और उसके बाद क्रिएशन होता है. और क्रिएशन के ये स्टेज होने से पहले ना कि वहां पे ब्रह्मा थे और ना ही वहां पे शिव जी थे, बाकी लोगों का क्या पूछना, तो वो लोग थे ही नहीं. इवन शंकराचार्य ने ये सारी चीजें एक्सेप्ट किए हुए और वो कहते हैं कि नारायण जो है वो मटेरियल क्रिएशन के बाहर है और बाकी जो है वो मटेरियल क्रिएशन अंदर, लेकिन नारायण जो है मटेरियल क्रिएशन बाहर है. खुद शंकराचार्य ये चीज को एक्सेप्ट करते हैं. The whole material creation therefore is one and different from Narayana. Simultaneously, and this supports the Achintya Bhedabhed philosophy of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. To be one and different simultaneously is Achintya Bhed Abhed. भेद भी है, अभेद भी है. This is अचिंत्य. हम लोग उसको कंसीव नहीं कर सकते. Being an emanation from the glancing potency of Narayana, the whole material creation is non-different from him. That is Abhed. But because it is the effect of his external energy, Bahiranga Maya, and is aloof from the internal energy, Atma Maya, the whole material creation is different from him at the same time. That is Bhed. The example given in this verse is very nicely is that of the dreaming man. The dreaming man creates many things in his dreams, and thus he himself becomes the entangled seer of the dream and is also affected by the consequences. This material creation is also exactly a dream-like creation of the Lord, but he, being the transcendent super soul, is neither entangled nor affected by the reactions of such dream-like creations.
जैसे सपने में व्यक्ति को उस पे एक्चुअली इम्पैक्ट नहीं होता है, तो उसी तरह से भगवान पे भी इम्पैक्ट नहीं होता है. इट इज लाइक ए ड्रीम फॉर हिम, इट इज नॉट इम्पैक्टेड. So this is how we finished our first chapter of second canto. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, with all the purpose of Srila Prabhupada and some of Vishwanath Chakravarti Thakur. So anyone has to add, comment, share his relation before I end close the recording. Hare Krishna Prabhu. ये slide का थोड़ा मुझे just if you can summarize this one, I missed it. I was in some other call. Sorry, So just 2 or 5 minutes. Yeah, Prabhuji. Sure. So Prabhu is basically जो अभी तक बोले थे उन्होंने, तो वो बोल रहे कि काफी सारे जगह पे एज विसे कि मुंह मारना है, सारे सारे अलग अलग ये प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस करना है, ये करना है, वो करना है. सो व्हेन वी ट्राई टू डू दैट वेरी इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्पिरिचुअल के यहाँ पे ट्राई करना है, वो ट्राई करना है, उधर फोकस करना है. सो सुखदेव गोस्वामी सिंह कि अगर ऐसे करने से, I mean, who is a serious practitioner of spirituality, he should focus only on this form of the Lord. ये मटेरियल सेंस में बात करें, अभी भी भक्ति के लिए नहीं बात करें. अगर उनको ऐसा करना है, मिस्टिक पावर ये वो सब चाहिए, फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ द लॉर्ड. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. सो ही इज कोटिंग एन एग्जांपल ऑफ ड्रीम्स में. जैसे हम लोग ड्रीम में रहते हैं, बट वी आर एट द सेम टाइम, कैसे मतलब वो ड्रीम में देखते हैं, बट वी आर नॉट एक्चुअली अफेक्टेड बाय ड्रीम में. अगर मारे गए, एक्चुअल में लोग मरते नहीं है. तो वैसे ही भगवान जो है, तो अलग मैनिफेस्टेशन उनका लेते हैं, अलग रूप वगैरह. एंड ही इज अनअफेक्टेड बाय दिस मटेरियल वर्ल्ड. दैट इज व्हाट ही इज रेफरिंग ओवर हियर. सो दिस इज हाउ ही इज कंक्लूडिंग दिस फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड कैंटो. So Hari Bol Prabhu. So anyone has to add? So Prabhu, this Achintya Bheda Ved is also referred to this, right? Yes, Mataji. It is, yeah, in the purport he refers. You want to share that, Mataji? No. Like Bhagwan, I think you concluded, no, that वो हमारी बुद्धि से बाहर हैं, हमारे अपने बुद्धि और concoction से he is beyond, way beyond. Yeah, so that is infinite perspective of the Godhead. Yeah, rather researching on him, it just you should be a devotee. But I think Prabhu, because of our the brain only, he cannot just accept anything. Like as we started, no, कि हर किसी के लिए इतना आसान नहीं है, to come out from this mental concoction. उसके लिए I think एक अलग mercy का जरूरत रहता है. नहीं तो our brain itself is like how, अरे ऐसे कैसे accept कर लें. जैसे आपने बोला ना that शिवा को लोग फिर भी एक as a lord accept कर पाते हैं, because they see, otherwise वो तांडव कर देंगे, तीसरी आंख खोल देंगे, ये है वो है करके. तो then वो शायद fearfulness और वो इतना उनका ferocious रूप देख के then people are okay, हाँ ये God है, उसको God मान लेते हैं. बट मटेरियल वर्ल्ड में वही देखते हैं हम लोग, राइट माता जी? जो भी बड़ा है, ह्यूज है, वो पावरफुल है. या फिर ह्यूमन फॉर्म ऐसा है कि जो डराता है हम उसे ही बड़ा मानते हैं, चाहे वो फिर मटीरियली, मतलब आप पैसे से भी देखो, या फिजिकल एनर्जी, या जिसका बहुत ऐसा रहेगा कि बहुत वो ताकतवर है, चाहे वो मटीरियली ताकतवर कैसे भी रहे, उसी को ही हम बड़ा मानते हैं, उसी को ही हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ इसको हम फॉलो करेंगे एज अ लीडर. तो और जब एक बांसुरी लेके और एक, जैसे आपने बोला, वो 16 साल का लड़का खड़ा हुआ है, who will take him? Everybody will take him for granted. अरे ये तो गोपियों के साथ सिर्फ रासलीला करने आया और चला गया, मतलब ऐसे करके. बट वही भगवान का सीक्रेट छुपा हुआ है कि दिस इज हाउ, जैसे मूवी में नहीं होता है कि जो मेन इम्पोर्टेंट किरदार होता है वो कभी सामने नहीं आता है, तो ऐसे ही भगवान का भी ये ऐसा ही कुछ रूप है जो सबको समझ में नहीं आता है. और यस, मेंटल कॉन्कॉक्शन से बाहर, हाँ, उसके बाहर है वो उनकी लीला. There is one story I keep saying, Mataji, मैंने बोला भी रहेगा. So one person, he was visiting different temples, one foreigner trying to study Hinduism. तो अलग अलग temples में जाके सारे deities को देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था. तो एक टेम्पल में जब आया तो
जब ऐसे एक डिवोटी से वहां पे बातचीत हो रहा था, डिवोटी ने पूछा कि क्या समझा आपको, तो उसने बोला कि मुझे ये जो डीटी है राधा कृष्णा का, तो ये मुझे भगवान लग रहा है कृष्णा करके। तो मतलब हाउ हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन, मतलब ये कैसे है। तो मैं बाकी जो डिटीज में देख रहा हूँ, दे आर विथ सम वेपन, इधर त्रिशूल है, ये है, वो है, कुछ ना कुछ लेके खड़े रहते हैं जैसे गार्ड्स रहते हैं, बट ये जो है वो फ्लूट लेके एंजॉय कर रहे हैं। तो ही शुड बी गॉड, बिकॉज गॉड एकदम ऊपर जो रहता है वो एंजॉय करेगा, व्हाई वुड ही बी विद सम काइंड ऑफ वेपन स्टैंडिंग स्टैंडिंग गार्ड टू समथिंग। तो ये व्यक्ति जो रहेगा, बिकॉज ही इज एंजॉइंग, that this person must be god. Other people I don't see them enjoying. This person is, they are doing some kind of duty, but this person is enjoying, he must be god. So this perception भी लाना है। वो डिवोटी ने, जैसे वो जो व्यक्ति ने, टूरिस्ट जो भी था, उसने परसेप्शन लाया, सिंपल था, बट वो परसेप्शन भी लाना इज दैट रिक्वायर्ड सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस एंड कृष्णास मर्सी। वो परसेप्शन, Very जैसे आपने true. बोला। बाकी हाँ, very हम true. लोग हम लोग हाँ. अलग परसेप्शन देखते हैं, अरे ये त्रिशूल ये बड़ा है, मतलब यही व्यक्ति रहेगा। तो Yeah, हर एक yeah. का है पर्सन, बट या सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हमारे जो परसेप्शन है, हमारे सेंसेस जो है, माइंड जो है, वो उस तरह से, जिस तरह से हमें हमारे फ्रेमवर्क बनाता है, उस तरह से हम उसको ये करते, फिट करते, वो भगवान है, वैसा हमारा लॉजिक है। एंड आपने कभी लाइन बोली कि मतलब हर कोई एक ना शस्त्र अस्त्र लेके खड़ा हुआ है, तो मतलब वो कुछ तो ड्यूटी कर रहा है। वो आपने एक ट्रू, वर्ड बोला, ड्यूटी कर रहा है। एक्चुअली यस, वो ट्रू, लोग सब ड्यूटी कर रहे हैं असाइंड बाय कृष्णा, एंड कृष्णा हिमसेल्फ इज एंजॉयिंग विद फ्लूट। तो वो बस चीज, हाँ, वो चीज समझ से बाहर है हर किसी के प्रभु। अब वही कैच है, वही वही सारा कैच है। अगर वही समझ में आ गया, तो then this all is done, then you will be devoted to him. ट्रू माता जी। तो लेकिन वो जल्दी से समझ में नहीं आने का ये होगा परसेप्शन भी अगेन। नहीं पकड़ पाएंगे सब लोग। हाँ, वो उसके लिए भी शायद मुझे लगता है मर्सी की जरूरत है प्रभु। ऐसे मर्सी, ट्रू। अगर हर कोई पकड़ ले तो फिर बात ही क्या, फिर तो सब छोड़ छाड़ के सब कृष्णा के पीछे ही, है ना। तो उसके लिए भी वही दो फिंगर वाला ही कॉन्सेप्ट जो अपना दामोदर का दामोदर का। लीला का है ना, हाँ, वही अप्लाई होता है। हरि बोल माता जी, वेरी यस। नाइस क्लास प्रभु, थैंक ट्रू यू माता जी। एज So we'll turn यूजुअल। off the recording, Mataji, if nothing more to add. Hare Krishna, Hare Krishna.